Hello, Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Hope you all are fit and fine. I am your teacher, Miss Marine Yasir, class 2 students. Now we'll start our today's English class. Today the date is 9th August 2021 and the day is Monday. Our today's task is on English school workbook. Today we will do page number 44. Let's take out your English school workbook. An important note for both the groups. Group A will do this homework on Tuesday and Group B will do this homework on Monday. Today we will learn the concept of use of these and those. When will we use these and those? We will use these and those when we have more than one thing. जब भी कोई चीज़ हमारे पास एक से ज़्यादा होगी या फिर हमारे पास कोई भी चीज़ प्लूरल होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम दीज एंड दोज यूज़ करेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइज वेयर वी विल यूज़ दीज. हम दीज को कहाँ यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ दीज व्हेन द थिंग्स नियर इन डिस्टेंस फ्रॉम अस. जब भी कोई चीज़ हमसे डिस्टेंस में नियर होती है यानी कि करीब होती है, वी विल यूज़ दीज. These cherries are near in distance from us. And where we will use those. हम those को कहाँ यूज़ करेंगे. When the things far in distance from us. जब भी कोई चीज़ें हमसे distance में far होती हैं यानी दूर होती हैं तो हम those यूज़ करते हैं. Those cherries are far in distance from us. These and those. We will use these when the things are near in distance from us. These candies are near in distance from us, so we will use these with them. And we will use those when the things far in distance from us. Those cupcakes are far in distance from us, so we will use those here. These are apples and these are near in distance from us, and those are apples and they are far in distance from us. This is the page number 44. First of all, write date, homework and day on the top of the page. Use of these and those. Look at the pictures and fill in the blanks using these and those. Hint, near in distance these and far in distance those. आपने इस पेज पे क्या करना है, आपने इन पिक्चर्स को देखना है, आपने इन ब्लैंक्स को दीज एंड दोज का यूज़ करके फिल करना है. आपका हिंट है, अगर कोई भी चीज़ आपसे नियर इन डिस्टेंस होगी तो क्या यूज़ करेंगे, हम दीज यूज़ करेंगे. और अगर कोई भी चीज़ हमसे फार इन डिस्टेंस होगी तो हम दोज यूज़ करेंगे. Okay, my dear students, I hope you understood the lecture. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care of yourselves.